Ignition of S-139 coincides with the T0 or liftoff. All the 5 engines simultaneously. At 110 seconds into flight and 40 kilometers altitude, S-139 burns out and L-40 stages continue to develop power till 148 seconds. Though the first stage completes its operation, the staging of first stage is typical hot separation, wherein the second stage, GS2, ignites before the separation of GS1. By now, the rocket is at 70 kilometers altitude. T-minus 4 minutes. The burn time of GS2 is 141.4 seconds. By the time the stage completes operation, an altitude of 130 kilometers would have been achieved. During the operational regime, the rocket clears the dense atmosphere and hence 2 major flight events take place: initiation of closed-loop guidance and separation of payload fairing. 3 seconds after GS1 completes its operation, it is separated from the ongoing rocket. The cryogenic upper stage is commanded for ignition 1 second thereafter. This third stage of GSLV is powered by indigenous engine and stage C-15. The burn time of third stage is 113 seconds. While only 100 kilometers is added in terms of altitude, the relative velocity addition is remarkable, 5 kilometers per second. T-minus 3 minutes. For the viewers to better appreciate this change in velocity, let me tell, when cryo stage begins, the relative velocity is 16,920 kilometers per hour, and by the time it ends its operation, it is 34,920 kilometers per hour. This high velocity is characteristic of geosynchronous transfer orbit. The spacecraft of the mission insat 3DS is scheduled to be injected at 1123 seconds into flight, or as close as possible to this time mark when the right orbital parameters are achieved. This is the periapsis of the orbit. Once the spacecraft reaches the apoapsis of this high eccentricity orbit, it performs a burn using spacecraft propulsion to circularize its orbit. अब हम प्रमोचन से 2 मिनट की दूरी पर T-minus 2 minutes. Excitement for the launch building up. We are very close to the launch, about 90 to 100 seconds away. सभी छात्र छात्रगण बड़े उत्साहित होकर इंतजार करते हुए प्रमोचन का भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं। मौसम पूरी तरह अनुकूल, शाम का समय है। ये सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। ऑक्सीजन टैंक रेडी। सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे L-40 का इग्निशन शुरू होगा All stations और कोर बूस्टर के प्रज्वलन के तुरंत पश्चात क्रायो आर्म को अलग रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा। All stop sound. Minus 55 seconds. L-40 VHPP opened. Minus 50 seconds. Gas bottle ready. Minus 45 seconds. All sequencers armed. Hydrogen tank ready. Cryo stage ready. Minus 40 seconds. GS2 VHPP opened. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. L-40 VSPP opened. Time program set. Minus 25 seconds. GS2 VSPP opened. GS1 ignition. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L-40 stages 0. are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. A perfect lift-off. GSLV F-14 Plus 10 insat seconds. 3DS progressing towards its Stage destination. performance normal. T4 tracking. Plus जी हाँ, 15 अभी हमने seconds. देखा चारों L-40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो Plus चुका 20 है seconds. और Put the GSLV F-14
उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ। Clear sky. We can see the rocket very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं। इसका सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता Char 1 है। is in main auto. यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Char 2 is in main auto. Plus 1 minute. प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। First stage performance normal. प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा 4 L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए। P2 change over to CP2. Presently, the core booster and the 4 L40 strap-ons thrusting simultaneously. S139 scheduled to burn for 110 seconds. S39 stage ban out. एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं 4 L40 तथा कोर बूस्टर Plus 2 S139 minutes. प्रज्वलित है। First stage performance normal. कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L40 अभी भी जारी हैं। इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The 4 L40s thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. 40 stages thrust cut off. First stage separated. Second stage ignited. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की। प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया No गया slope है guidance initiated. और उसके तुरंत बाद ही GS2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. There are a quick succession of several flight event confirmations by the Range Operations Director. Plus 3 The minutes. first stage comprising of the S139 and L40s have been separated. The second stage is ignited and the performance is reported to be normal. We are 190 seconds past the launch time. Present altitude is close to 100 kilometers and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण GSLV F14 का प्रज्वलनरत है। Second stage performance normal. इस दौरान यह 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिब्बल Payload fairing separated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है। यह घने वातावरण को पार कर Plus चुका 4 है। minutes. Dense atmosphere has been crossed by the launch vehicle and hence the payload fairing has been separated. Presently, Shah ground station continues to track and Port Blair station has started to acquire the data. यह मिशन Second stage पूर्वी दिशा का मिशन है, performance normal. इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक करते हुए The planned burn time of GS2 is No stage is 141.4 authorized. seconds. क्रायो अपर स्टेज जो कि तृतीय चरण है GSLV F14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए। द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात पृथकन होगा। Second stage thrust cut off. जी Third stage ignition commanded. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है। Third stage ignition confirmed. Now a jubilant atmosphere here in the mission control center as the confirmation of the CUS engine startup has been obtained.
जी हाँ, सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन क्रायो इंजन का प्रज्वलन, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। क्रायो इंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सेकेंड। Burn time for cryogenic upper stage is 814 seconds. सभी दर्शकों के लिए यह उत्साहपूर्ण पल। Cryo stage performance normal. Present relative velocity is close to 5 kilometers per hour. The cryo stage, I'm sorry, the relative velocity presently is 5 kilometers per second. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए इस मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। इनसैट 3DS पृथ्वी के सतह की निगरानी करने के लिए मौसम विज्ञान के महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्र और उसके पर्यावरण Cryo का stage परीक्षण करना, performance normal. वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा तैयार करना, डेटा संग्रह तथा डेटा प्रसारण की क्षमता को बढ़ाना, उपग्रह की सहायता से खोज एवं बचाव सेवाएं प्रदान करना। यह सभी उद्देश्यों के साथ इनसैट 3DS यात्रारत है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर। +8 minutes. The satellite INSAT 3DS is fully funded by the Ministry of Earth Sciences, various of its departments such as India Meteorology Department, IMD, National Center for Medium Range Weather Forecasting, NCM RWF, Indian Institute of Tropical Meteorology, IITM, National Institute of Ocean Technology, NIOT, and Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS, and various other agencies and institutes will be using INSAT 3DS satellite data to provide improved weather forecasts and meteorological services. इनसेट 3DS उपग्रह को पूर्णतः इसरो के मानकानुसार तैयार किया गया है। Cryo stage performance इस उपग्रह normal. का अक्ष नियंत्रण शून्य संवेग अभिनति तंत्र पर निर्धारित है, जो 4 रिएक्शन व्हील्स तथा जायरो की मदद से क्लोज लूप नियंत्रण का प्रयोग करेगा। इसमें ऊर्जा तंत्र में 100 एम्पियर आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ एक तरफा सौर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है, जो लगभग 1.6 किलोवाट की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय ताप नियंत्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस उपग्रह को 10 साल के मिशन काल के लिए अभिकल्पित किया गया है। इनसैट 3DS के निदभार में 6 चैनल इमेजर है, 19 चैनल साउंडर, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और उपग्रह सहाय खोज एवं बचाव के लिए ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं। इन सभी निदभारों के द्वारा इनसैट 3DS मौसम संबंधी क्रांतिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा। +10 minutes. मौसम संबंधी सभी आंकड़ों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और Cryo ऐसे stage कई performance प्रौद्योगिकी normal. एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ इसे साझा कर इस उपग्रह को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाएगा।
इन सभी आंकड़ों से मौसम पूर्वानुमान और संवर्धित होगा और सटीक हो सकेगा। वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है और समान निष्पादन कर रहा है। अब यान की ऊंचाई 136 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। We are close to 11 minutes past the launch time. Port Blair station currently tracking, and Brunei station will shortly start to acquire the data. INSAT 3DS satellite carries a multispectral imager or optical radiometer capable of generating images of Earth and its environment in 6 wavelength bands. Atmospheric motion vectors are derived by tracking clouds or water vapor pattern in successive satellite images. AMV Cryostate includes performance information on normal. wind speed and direction. The 19-channel sounder payload will provide the information on the vertical profiles of the atmosphere, sea and land surface temperature, cloud properties, and microphysical parameters, upper tropospheric humidity profiles, Plus 12 minutes. and total ozone, etc. to study about atmosphere, land, and ocean. Data relay transponder receives global meteorological, hydrological, and oceanographic data from automatic data collection platforms or automatic weather stations from multiple users and relays back to user terminal. The data products that generated cater to varied range of applications. The history of automatic weather stations in India can be traced back to 1980 when IMD conducted a pilot experiment with ISRO to operate small network of data collection platforms via satellite for Earth observation to the receiving station at Sriharikota. Cryostage performance In normal. 1997, the AWS network was upgraded. IMD has a network of many AWS, Agro AWS, and ARC. इस उपग्रह में मुख्य नितभार के रूप में है इमेजर पेलोड। इनसैट 3DS उपग्रह का यह नितभार एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर है जो पृथ्वी और उसके पर्यावरण की 6 तरंग वेवलेंथ में प्रतिबिंब लेने में सक्षम होगा। इस उपग्रह में 19 ट्रांसपॉन्डर पेलोड भी हैं। साउंडर पृथ्वी के वायुमंडल की लंबवत रूपरेखा तैयार करेगा और इसमें सम्मिलित हैं तापमान, आर्द्रता आदि सम्मिलित हैं। इसमें डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं जो स्वचालित डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म में वैश्विक स्तर पर मौसम, जल तथा समुद्र विज्ञान के आंकड़ों को इकट्ठा कर एक जगह से दूसरी जगह रिले करने में सक्षम होंगे। इस उपग्रह में खोज और बचाव कार्य के लिए ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं। इसमें बीकन ट्रांसमीटर हैं जो आपदा संदेशों को रिले करता है और चेतावनी संदेशों के लिए भी संवेदनशील है। UHF बैंड में वैश्विक कवरेज के साथ यह आपदा प्रबंधन में एक बहुमूल्य सहायक होगा। Cryostage performance normal. We are 14 minutes, close to 30 seconds past the launch time. Cryo stage presently operational and developing nominal thrust. Brunei station continues to track. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए ग्राउंड स्टेशन शार 1, शार 2 तथा पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने, बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें इसके आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं।